तो गाइस हम लोग लाइव आ चुके हैं बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, वी आर बैक वी आर बैक वी आर बैक। एंड एंड आज हम करने वाले बिग डेटा के कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं कुछ कुछ। और मैं पहले पहले आपको डिस्प्ले ऑफ करता हूँ अपना 2 मिनट के लिए। मैं कैमरा लेके गया है। नहीं। 1 सेकंड गाइस। एक मिनट गाइस। तो हम लोग वापस आते हैं अपने उस पे, जो भी हम लोग करने वाले हैं। बॉट्रिक्स, अस्सलाम वालेकुम वेंकटेश मियाँ। आर्यन भाई ने लिखा है वालेकुम अस्सलाम। हम्म। नमस अ, आर्यन सिंह सिंह, नमस्ते। ब्लेस यू। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हो आर्यन भाई? फुल चोदिंग कर रहे होगे आर्यन भाई। नहीं, मैं देख रहा हूँ, आर्यन देख रहा है अभी स्ट्रीम। चलिए गाइस, मैं एक बार देखता हूँ। वेंकटेश मियाँ, आप रमजान की हलीम कब खिला रहे? अरे, हम पहले खुद तो खा लें, फिर तो खिलाएंगे। फंसवाओगे तुम हमको। ये सब करके पूरा चैट सेक्शन चैट सेक्शन में पूरा भर जाएगा मेरा। आर्यन, अभी का क्या सेलेक्ट करना था गाइस? पूरा ये विंडोज कैप्चर हमारा अजीब हो गया है। फिर से सोर्स जोड़ना पड़ेगा मुझे। यस, एड सोर्स। मे बी दिस टाइम इट शुड वर्क। भाई साहब, काम नहीं किया। नूराय तकबीर, अल्लाह अकबर। ओ भाई, ये देखिए चैनल कंट्रोवर्सी करवाएंगे। आर्यन भाई कंट्रोल,
कंट्रोल, अरे ये सब मत लिखो गाइस, हंसने वाली बात नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता है, नहीं ये सब होता है, लेकिन ये पता नहीं कौन से इमोजी बना दिए हैं। आई डोंट नो दिस इमोजी। ओ भाई क्या भौंक रहा है कुत्ता पीछे। भेड़िए की भौंके गाइस। पहले ये विंडो कैप्चर हटा देता हूँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा से फायरफॉक्स ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा छोटा मोटा सेटअप है गाइस, बस फिर आता हूँ मैं, छोटा सा सेटअप है। हाँ हाँ जी, हाँ जी आते हैं, हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइक। मैं बोलना चाह रहा, मैं बोल नहीं पा रहा। ओ भाई आज ये कैप्चर ही नहीं कर रहा। सो चलिए शुरू करते हैं बिग डेटा कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा हाँ, हाँ शुरू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। बात अरविंद भाई ने बिल्कुल सीरियस करी है। अब हम सीधा डिस्प्ले कैप्चर ऑन कर देते हैं। अब देखिए बिल्कुल चैट दिखना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर भी। ओके ओके, लेट्स गो। पहले जो फाइल डाउनलोड की है हमने वो निकालते हैं। ये नहीं। ओ रियली, ओ रियली। हडूप डेफिनेटिव गाइड, क्या पढ़े इसमें गाइस। एक तो आपसे छुपेगा कुछ नहीं, जब तक मैं विंडो कैप्चर ऑन नहीं करूंगा आप सब देख लोगे। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे खुद से ढूंढना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ाया गया है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, सो वी आर एट चैप्टर 3, Hadoop distributed file system. When a data set outgrows the corresponding capacity of single physical machine, it becomes necessary to partition it across a number of separate machines. अच्छा, ठीक है, ये तो सिंपल है। फाइल सिस्टम दैट मैनेजेस स्टोरेज across a network of machines are called distributed file systems. ठीक है, since they are network based, all the applications communication connect network programming can thus distributed file systems more complex than regular files systems. For example, one of the biggest challenges in making the file system tolerate node failure without suffering data loss. मतलब गाइस, मतलब इसका ये है कि फाइल सिस्टम में गड़बड़ी क्या है कि अगर आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आपके कंप्यूटर के अंदर आपके सारे फाइल पड़े हैं, आपने गेम खेलते हो, गेम के फाइल कंप्यूटर में पड़े हुए हैं, आपने वीडियो सेव कर रखी है, पता नहीं जाने कौन सी वीडियो सेव कर रखी है ना, तो क्या बोलते हैं उसके ही फाइल पड़े हुए हैं। तो आपका कंप्यूटर खराब हुआ तो आपके फाइल भी गए, है ना। अनलेस एंड अनटिल आपने क्लाउड जैसी स्टोरेज में स्टोर कर रखा है, अब वो अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा, आपको आता नहीं है क्लाउड, क्यों नहीं आता, आपकी गलती है ना, तो तब आपका फाइल सिस्टम का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, जीरो व्यूअर्स, वाओ। Hadoop comes with a distributed file system called HDFS, which stands for Hadoop Distributed File System. You may sometimes see reference to DFS, normally in or informally or in order documentation or configurations, which is the same thing. HDFS is Hadoop's flagship file system and is the focus of this chapter, but Hadoop actually has a general purpose file system abstraction. So we will see along the way how Hadoop integrates with other storage systems such as file चलते ओ गाइस, हमने कुछ चैप्टर्स मिस कर दिए, वी मिस सम चैप्टर्स। फा, ओ गॉड, हमें मैप रिड्यूस से स्टार्ट करना था या डेटा से स्टार्ट करना था। मीट हडूप से स्टार्ट करते। ओके, मीट हडूप कितने पेजेस का हो गया? 756 पेजेस, यानी ईच चैप्टर कितने पेज? मैंने स्टार्ट किया 5 से। देखते हैं आज कितनी स्पीड रीडिंग कर पाते हैं हम लोग। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अपाचे हडूप, वेयर वी कैन 12, बस इतना ही। हडूप स्ट्रीमिंग 15 तक जाएगा क्या बस? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैप रेड्यूस स्टार्ट हो जाता है 15 पेज में ही। चलिए कर लेते हैं फिर जल्दी, आइए। Meet Hadoop data. We live in the data age. It is not easy to measure the total volume of data stored electronically, but an IDC estimate put the size of the digital universe at 4.4 zettabytes in 2013 and is forecasting a 10-fold growth of 20 to by 2020 to 44 zettabytes. समझ रहे हो गाइस? zettabytes कितना होता है? चलो सर्च करके देखते हैं। zettabytes
ज़ेटाबाइट्स। ओ गॉड, इतने पैसे तो मेरे 100 जन्मों में भी, 100 जन्म में क्या, 10 जन्म में इकट्ठा हो सकते हैं। जस्ट, और हर एक जन्म में इसका बाई 10th कमाऊंगा। ज्यादा बोल दिया गाइस क्या? बहुत बड़ा है ये। 6, 6, 18, 3, 10^21 इज zettabyte। ओके, हाँ, 10^21। ओके, zettabyte is 10^21 bytes, और इक्विवेलेंटली 1000 exabytes, 1 billion petabytes, और 1 billion terabytes। बहुत ज्यादा बाइट्स देख लीजिए। That's more than one disk drive for every person in the world। Okay, the flood of data is coming from many sources. Consider the following: New York Stock Exchange generates about 4 to 5 terabytes of data per day. Facebook hosts more than 240 billion photos, growing at 7 petabytes per month. Ancestry.com, the genealogy site, stores around 10 petabytes of data. The Internet Archive stores around 18.5 petabytes of data। बहुत ज्यादा डेटा की बात हो रही है, डेटा बहुत ज्यादा है ना। The Large Hadron Collider near Geneva, Switzerland, produces about 30 petabytes of data per year. So there is a lot of data out there, but you are probably wondering how it affects you। आपको कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, आपका क्या मतलब इससे? The most of the data is locked up in the largest web properties like search engines or in scientific or financial institutions, isn't it? Does the advent of big data affect smaller organizations or individuals? I argue that it does। Take photos for example। My wife's grandfather, इसकी बीवी का बाप है ना, बीवी के दादा, was an avid photographer and took photographs of throughout his adult life। बहुत फोटोजेनिक बुढ़ा था, ठीक है, मतलब फोटो का शौकीन बुढ़ा था, है ना। His entire corpus of medium format slide and 35 mm film, when scanned at high resolution, occupies around 10 gigabytes। अच्छा, अरे 10 GB तो भाई कुछ नहीं है। मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज है 512 GB, तो इसके दद्दे की फोटो मेरे कंप्यूटर में आ जाएगी। Compare this to my digital photos my family took in 2008, which take up about 5 gigabytes of space। Okay, डिजिटल वालों की कम स्पेस लग रही है। अच्छा, my family is producing photographic data at 35 times the rate my grandfather did, and the rate is increasing every year as it becomes easier to take more and more photos। लोगों को फोटो लेने की आदत हो गई है, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालते हैं तो फोटो से आप पैसे कमा सकते हो। क्या पता आपकी पोस्ट इतनी वायरल हो जाए, है ना। सपने देखो, मजा आता है ना सपना देखने में, सच हो जाए तो और भी मजा आता है। More general, the digital streams that individuals are producing are growing apace। Microsoft Research My Life Bits project gives a glimpse of achieving a personal information that may become commonplace। ये बहुत ज्यादा कहानी है गाइस डेटा के बारे में। डेटा स्टोरेज एंड एनालिसिस। The problem is simple. Although the storage capacities of hard drives have increased massively over the years, access speeds, the rate at which data can be read from drives have not kept up। अच्छा, one typical drive from 1990 could store 1370 MB of data and had a transfer speed of 4.4 MB per second। So you could read all that data from a full drive in around 5 minutes। अच्छा, 4.4 MB per second, ये अच्छी स्पीड यार, 1990 के हिसाब से तो अच्छी है। काइंड ऑफ गुड स्पीड आई वुड से। Over 21 years later, 1 terabyte drives are now known, and the transfer speed is around 100 MB per second। So it takes more than 2.5 hours to read all the data of the disk। अच्छा, टेराबाइट हो गया नॉर्म। This is a long time to read all the data from a single drive, and writing is even slower। The obvious way to reduce the time is to read from multiple disks at once। Imagine if we had 100 drives, each holding 100 of the data working in parallel, we could read the data in under 2 minutes। हाँ, ये तो बात सही की है। एक पेन ड्राइव होती है, और मतलब बहुत सारे डिस्क होते हैं, एक सीडी में सारा डेटा हो, और ऐसे 100 सीडी हो जिसमें उनका 1/100 डेटा हो। जैसे 1 टेराबाइट को आपने 100 सीडी में बांट दिया, कितना, 1 टेराबाइट कितना होता है, 1000 1 TB is 1000 GB। ओके, सो यू डिवाइडेड देम इनटू 100 सीडी, तो हर किसी में 10 GB हो गए, क्योंकि 1000 GB होता है, तो 10 GB तो आपने 2 मिनट में रीड कर सकते हो। इट्स नॉट, है ना। तो क्योंकि आपको 1000 के लिए अगर आपको 2 घंटे लग रहे थे, तो
तो आप 2 मिनट में तो रीड कर सकते हो, मेरी मैथ्स गलत हो जाए उस पर ध्यान मत देना, फिर इतना तो ध्यान दो कि टाइम कम लगेगा तुम्हें। तो पैरेलली आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पैरेललाइजेशन करके। यूजिंग ओनली 1/100th of the disk may seem wasteful, but we can store 100 data sets of each of which is 1 TB and provide shared access to them. We can imagine that the users of such a system would be happy to share। क्या कोई है? कोई भी नहीं है। Would be happy to share access in return for shorter analysis times, and statistically that their analysis jobs would be likely to be spread over time so that they would interfere with each other too much। There is much more। Oh god, ये कहाँ आ गए हम लोग? There is much more being able to read and write data in parallel from multiple disks। दो डेटा रीड राइट से भी बहुत ज्यादा काम होते हैं डेटा को, और यही सब काम नहीं होते। The first problem to solve is hardware failure। As soon as you start using many pieces of the hardware, the chance that one will fail is fairly high। A common way of avoiding data loss is through replication। Redundant copies of the data are kept in the by the system so that in event of failure, there is another copy available। This is how RAID system works। RAID works for instance, although Hadoop's file system, the Hadoop distributed file system, takes a slightly different approach, as you shall see later। The second problem is that most analysis tasks needs to be able to combine the data in some way, and data read from one disk may need to be combined with the data from any other 99 disks। So various distributed systems allow data to be combined from multiple sources, but doing this correctly is notoriously challenging। तो ये guys सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। अभी MapReduce provides a programming model that abstract the problem from disk reads and writes and transforming it into computation over sets of keys and values। Okay, we look at the details of this model in later chapters, but the important point for the present discussion is that there are two parts of the computation: the map and the reduce, and its interface between the two where the mixing occurs। Like HTFS, MapReduce has a built-in reliability। कुछ कुछ बातें हुई कि भाई MapReduce क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग मॉडल है जो एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रॉब्लम फ्रॉम द डिस्क एंड रीड्स एंड राइट्स, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू कंप्यूटेशन ओवर सेट्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज। वैसे मुझे गाइस याद है, मुझे कुछ करना था, करते हैं यार। वो वर्चुअल बॉक्स में मेरा जो यान है ना वो काम नहीं कर रहा, और उसके कारण है कि मैंने जावा का 21 वर्जन उसमें डाल रखा है। आप भी देख लो, मैं आपको बताता हूँ क्या एरर होता है। कई बार आपने वर्चुअल बॉक्स में हडूप डालते होगे ना, तो आपका डेटा नोड और नेम नोड का वेबसाइट खोल रहा है, लेकिन आपका यान रिसोर्स मैनेजर नहीं खुल रहा है ना, या फिर कोई लोकल होस्ट की साइट नहीं खुल रही। तो उस केस में ये इंस्टॉलर क्यों खुल गया है ना, इसको हटाते हैं। यस, यस मेरे पास पहले है। ओके, पहले से है। तो उस केस में लगता है आपने जावा 21 डाल दिया है ना, वो वहां पे अपने जावा 21 डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। मैं खुद भी आज इस इशू को सॉल्व करके ही रहूंगा। अच्छा याद आ गया मुझे एचडीएफएस और हडूप वगैरह सुन के। देखिए कुत्तों की लड़ाई हो रही है भाई, कुत्तों का मुकाबला हो रहा है। भाई मैं बाहर नहीं निकलूंगा गाइस, कुत्ते लड़ रहे हैं। क्लाउडेरा खोल दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं मेरे बेटा, नहीं क्लाउडेरा नहीं। क्लोज भी नहीं कर सकते इसको, यहाँ से क्लोज मानना पड़ेगा। अरे यार ये क्यों खोल दिया, मुझे उबंटू खोलना था गाइस। जल्दी से उबंटू खोलते हैं, सेव इसका सेव स्टेट करना पड़ेगा, है ना। हल्का सा भूल गए थे यार हम। चलिए 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 चलिए।
कैसे भूल गए? तेरी मैं कसम, मैं तो खाऊंगा बीते बातों को। उबंट स्टार्ट करते हैं मेरा। हाँ, उबंट। बीते बातों को मैं तेरा चाहूंगा। एसी शैडोज। हाँ जी गाइस, ये हटाते हैं। ये तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है, हडूप इसको क्या हटाना। मेरे को सर्च करना है आई हैव, या फिर मैं सर्च करता हूँ शायद मैं जावा 8 डाला हुआ है। तो कहीं जावा 8 है क्या पहले से? जावा 8 है क्या पहले से कहीं? जावा की लोकेशन सर्च करनी है मुझे। मुझे लगता है यहाँ होगी जावा की लोकेशन। ठीक है, होम लिब जेवीएम जेवीएम जावा 1.8 है। ओपन जेडी के जावा 1.21 है। जावा 8 भी है। कौन सा वाला जावा? इसकी लोकेशन मुझे चाहिए। ठीक है, वो 1.8 की नहीं। हाँ, 1.8 की ले ले। इतने सारे तो जावा डाल दिए मैंने भाई। आज हमारी कुछ मैडम ने कहा था कि जावा 1.8 लिखना है। मैम ने कुछ कहा था हमारे टीचर ने, तो 1.8 ही ले लेते हैं गाइस। कुड बी बेटर, शायद इससे चल जाए मेरा। कई दिनों से नहीं चल रहा, सो बहुत जगह मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ आप भी करो ना, ठीक है? आप भी करो। सोर्स पे जाओ अपने, और सुडो लिखो। सीडी पे जाओ इधर, फिर लिखो। इसको बढ़ा दो क्या साइज में? फॉन्ट का बढ़ा देना चाहिए ना यार। प्रेफरेंसेस थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट में मैं रखता हूँ कस्टम फॉन्ट। मोनोस्पेस क्या क्या रख सकता हूँ? बहुत कुछ रख सकता हूँ। मोनोस्पेस, आई कैन उबंटू सांस मोनो। नोटो कलर इमोजी। नोटो सांस क्या है? मोनोस्पेस ही रखते हैं। चलो ठीक है, मोनोस्पेस ही रखा। इतना ही है क्या? चलो इतना ही है, ठीक है यार। साइज बढ़ाना है मुझे यार। साइज, हाँ जी, 18 कर देते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। ठीक है, नाउ इट्स बेटर। तो आपको दिख रहा होगा मैं क्या कमांड लगाने वाला हूँ। पहले आप जाओ अपने सोर्स डॉट बैश आरसी में। नहीं यार, सुडो नैनो डॉट बैश आरसी चेंज मी। अब यहाँ मुझे एड्रेस बदलना पड़ेगा यार। रखा तो छुपा के रखा तेरे खातिर तू है। और फिर जावा 8 ही डाल के देखता हूँ। अरे ये क्यों डाल दिया मैंने इधर? अरे नहीं, इधर तो रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए इंस्टेड ऑफ जावा 21। अब हमें क्या करना है? यहाँ 8 बदल दूंगा मैं। चलो चलो इधर। बेसिकली मेरे पास कहाँ गए हम लोग? वी आर एट हडूप नहीं, वी आर एट वेयर वी आर गाइस। हम कहाँ हैं? अ, हम्म आज ठीक करके ही मानूंगा। चाहे दिन रात निकल जाए, तुम्हारा भाई ठीक करके ही रहेगा। लिब लिब 64।
इसमें जाना है मुझे जेवीएम में, जेवीएम, और यहाँ पे जाना है मुझे जावा 8 में। आई वेंट टू जावा 8 एंड देन क्या करना है मुझे, इसको, हाँ ये वाला पाथ तो सिंपली 21 का 8 कर देना है। इधर जाऊंगा मैं, 21 का 8 कर दूंगा। तो नाक में इरिटेशन हो रही है गाइस, 21 का 8 कर दिया एंड वी आर डन। यस, सोर्स, और एक चीज कर दीजिए इसको अपने एनवायरनमेंट में डालने के लिए, सोर्स टिल्डा, है ना, फॉरवर्ड स्लैश डॉट बैश आरसी। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं काम करेगा नहीं लेकिन करना तो चाहिए। अब एक कमांड दिखाता हूँ जो आप कॉपी कर लेना एग्जैक्टली अगर आपने हडूप डाला होगा। मैं यान साइट पे जाता हूँ, यान साइट ठीक है मेरी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन लेट मी गो टू एच डी एफ एस, नहीं, हडूप एनवायरमेंट डॉट एस एच। कॉपी करते रहना गाइस जो मैं कर रहा हूँ, हडूप एनवायरमेंट डॉट एस एच, ठीक है। यहाँ भी आपने कुछ गलत कर दिया होगा, इसको कर दीजिए जावा 8 कर दीजिए, ठीक है, जावा 8 करिए, ओके। और यहाँ पे यस करके सेव कर दो बफर को, ठीक है। अब जाते हैं, अब जाते हैं वेयर वी शुड गो, किधर जाना चाहिए, आप बताओ मुझे किधर जाना चाहिए। वी शुड गो वेयर, यार मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। एच डी एफ एस साइट, एच डी एफ एस साइट डॉट एक्सएमएल, ठीक है। इधर बहुत काम काम की चीजें हैं हमारी, इधर कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। कोर्स साइट, यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं लग रही है, ठीक है। मैंने सब जगह गड़बड़ ठीक कर दी गाइस, मैं चेक करना पड़ेगा क्या ठीक कर दी मैंने। वो क्या था, कौन सी पाकिस्तान वाले रोडीज का लाइन, मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई गाइस। वो भी अंधा, गजब बंदा था भाई वो, था नहीं है अभी, मजेदार बंदा भाई जो भी कहो। उसकी सिलेक्शन तो हो गई भाई गाइस, आपकी हो गई क्या। अब ये जो यान में मुझे लगता है ये सब प्रॉपर्टी चल जानी चाहिए, तो मैं 1 मिनट के लिए कॉपी मारता हूँ, ठीक है, और वापस अपने यान में जाता हूँ। मुझे लगता है यान साइट में आइए गाइस, पर क्लियर मार देता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखे, वरना मेरा मुंह आ जाएगा ना पास में तो आपको कुछ दिखेगा, दिखना है नहीं। यान साइट में आ गया मैं, क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे मेरा। अच्छा वैल इस प्रॉपर्टी तक है, तो मेरे को कहाँ से कॉपी मारना है, मेरे को कॉपी मारना है यहाँ से। और भी चीजें मिसिंग है, मिसिंग बहुत कुछ है इसमें। लेट्स जस्ट रिमूव इट फॉर अ वाइल, रिमूव, 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 और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, जो भी कॉपी पेस्ट करना है ना प्रॉपर्टीज में कॉपी पेस्ट मारूंगा। सो वेयर वी आर, इधर से उठाया, इधर ले गए, ये इंटरनेट पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है। सो इफ आई एम शोइंग दिस नथिंग, ओ प्रॉपर्टी 2 बार हो गई, अब चल जाना चाहिए, लगता तो है चल जाना चाहिए। हाँ सही है, ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेम नोड हडूप, ये सब कर दिया था मैंने, ये भी कर दिया था मैंने, जावा से रिलेटेड सब। अब मुझे लगता है चला के देखना चाहिए मुझे, पहले स्टॉप कर देता हूँ जितने प्रोसेस थे, पहले से तो स्टॉप थे ही।
अब चल तो जाना चाहिए गाइस। अखा तो छुपा के रखा तेरे खातिर, ही बना। बहुत टाइम लग रहा है गाइस। वेट अ मिनट। चल जा वरना मारा जाएगा। पहले हडूप के अंदर घुस जाइए आप लोग गाइस, वरना आप चला नहीं पाएंगे। एक तो लैपटॉप के वक्त बहुत पास हो गया मैं, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी इतना पास रहा तो। देखते हैं अब चल रहा है कि नहीं। अब चल रहा है, चल रहा है। जावा बुलेटिन तो बोलता ही है यार ये। लोकल होस्ट 8088। चल गया। यस। देखा गाइस मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। ओके। अब फाइल सिस्टम ब्राउज भी करेंगे तो चल जाएगा। भाई नो एरर, नो एरर भाई, चल गया। ओ भाई, मजा आ गया यार, सब चल रहा है अब। सब चल गया। कौन है ये? मजा आ गया गाइस, सब चल रहा है मेरा अब। खत छुपा के रखा तेरे खातिर। कौन है भाई? निखिल है। निखिल नहीं यार। तो गाइस पहले चेक कर रहे थे मेरा स्ट्रीम चल भी रहा था या नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा होगा ना। चल रहा था। और मैंने सर ब्रेक, सर ब्रेक चाहिए। अच्छा, मैंने देखा नहीं मैसेज आपका। ओह, चैट नहीं लगा के रखी थी ना यार, तो मैं चैट नहीं पढ़ पाया। रुकिए रुकिए, हमारे दो मित्र ने चैट किया, हम पढ़ नहीं पाए। इधर लगा के रखते हैं। हाँ जी, अब आएगा चैट। पहले चेक कर लेते हैं कि चैट ऐसे तो विजिबल नहीं है, लेकिन डिस्प्ले कैप्चर में दोनों ही विजिबल होगा। उसमें कुछ ऐसा है नहीं। सर ब्रेक ओके। देख सकते हैं गाइस, मैंने पूरा चला दिया है। ओके, मैं 1 मिनट डिस्प्ले कैप्चर ऑफ करता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है।
वापस आते हैं गाइस, वापस आते हैं, है ना। और आपने देख लिया मैंने सेटअप कर दिया है कंप्लीटली हडूप का पूरा। अब इसको स्टॉप कर देते हैं, जितना भी चला है सब कुछ, आई एम स्टॉपिंग इट। अच्छे से चल गया मेरा, और क्या चाहिए था मुझे, बस अच्छे से चल जाना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई वांटेड, एंड इट्स रनिंग नाउ परफेक्टली। ठीक है। अब अब अपने वापस से बिग डेटा कॉन्सेप्ट में आते हैं, जिसमें जोर जोर से पढ़ रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन वो काम आपके भी आएगा। डीमंस, this where my demons hide, this where my demons hide। ओके, चलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, एवरीथिंग आई एम स्टॉपिंग नाउ, क्लोजिंग, लेट्स क्लोज इट। 5 डावा डाल दिए बंटू के अंदर। To my eyes, this where my demons hide, this where my demons hide। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, रेड हडूप, रेड और इंस्टेंट हडूप फाइल सिस्टम, distributed file system takes a slightly different approach, as we shall see later। The second problem is that most analysis tasks need to be able to combine data in some ways. The read and data read from one disk may need to be combined with data from any of the, ये तो देख लिया था मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, मैप रिड्यूस में क्या होता है कि आपका प्रोग्रामिंग मॉडल होता है that abstracts the problem from disk's read and writes, transforming it into a computation over sets of keys and values। Okay, so मैं भूल गया, मैं भूल गया। हाँ, कि कीज और वैल्यूज से इसमें रीड राइट चलता है, जैसे आप बाद में कुछ देखेंगे डिटेल में। We will look at the details of the model in later chapters, but the important point for the present discussion is that there are two parts to the computation: the map and the reduce, and it is the interface between the two where the mixing occurs. Like HDFS, map reduce has built-in reliability। Okay, थोड़ा हम लोग बड़ा कर दे इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मेरा मुंह तो नहीं दिख रहा ना आपको? नहीं दिख रहा होगा ज्यादा। आर्यन भाई चैट कर रहे थे, अभी आर्यन भाई चले गए हैं सर ब्रेक बोल के। ठीक है, अब जाइए ब्रेक पे। अब in a nutshell, this is what Hadoop provides: a reliable, scalable platform for storage and analysis. What's more, because it runs on commodity hardware and it's open source, Hadoop is affordable। ठीक है, commodity hardware पता नहीं क्या होता है, सर्च कर लेते हैं। commodity hardware, readily available standards and cost effective computing components और devices। मतलब जल्द से जल्द जो कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स मिल जाए आपको। माउस चाहिए, कीबोर्ड नहीं, सीपीयू चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, अंदर की रैम चाहिए, जस्ट तुरंत के तुरंत मिल जाए और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ते में मिल जाए, बढ़िया चलने वाला पीसी सेटअप कर देना अपना, गेमिंग पीसी। लाइक सीपीयूज, मेमोरीज एंड स्टोरेज दैट आर मास प्रोड्यूस एंड इजीली इंटरचेंजेबल। मास प्रोड्यूस और जल्दी रिप्लेस भी करा जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है कम्युनिटी हार्डवेयर। अच्छा, एंड इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये सॉफ्टवेयर भाई जो है पूरा फ्री में अवेलेबल है ओपन सोर्स में। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस पे अपने चेंजेस भी रिकमेंड कर सकते हो अपने आप से, कि मतलब कोड करके। ऐसे हडूप का हम गिटहब सर्च करते हैं, ओपन सोर्स बस बोल दिया, ये मान थोड़ी ना लेंगे कि ओपन सोर्स है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे, हम सर्च करेंगे अपाचे हडूप, देखिए ये पूरा ओपन सोर्स है गिटहब पे। कितनी मस्त चीज है यार, अगर आप देखो तो। हडूप के कंट्रीब्यूटर से 626, किसी दिन मैं भी आ जाऊं, मजा आ जाए, है ना। जावा में लिखा है 93.1%, कितना, कितनी सुंदर बात है इसमें, जावा में लिखा है, देख रहे हैं। कमिट एक 7 आवर्स अगो हुआ है। किस दिन हम लोग भी इस पे कमेंट करेंगे, लेकिन अच्छा कमेंट करेंगे, इससे नहीं कि रीडमी में कर देंगे और फिर कंट्रोवर्सी करवा देंगे। समझ गए हो क्या आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेट्स गो। Querying all your data, the approach taken by MapReduce may seem like a brute force approach. Okay, the premise is that the entire data set
or at least a good portion of it can be processed for each query. But this is power. This is its power. MapReduce is a batch query processor and the ability to run an ad hoc query. Ad hoc query क्या होता है ये भी मुझे मालूम नहीं, वही निहायती गवार हूं मैं गाइस। आप भी होते हो, कुछ पढ़ने से पहले आपको निहायती गवार ही रहना पड़ता है, तभी आप कुछ पढ़ सकते हो, ना नहीं पढ़ पाओगे। आपने आपको समझोगे मुझे सब कुछ आता है तो कुछ नहीं आएगा आपको। An ad hoc query is a user-defined, unplanned, and flexible request for specific information from a database. Okay, designed to meet immediate or unique needs like unlike predefined or recurring reports. कुछ कुछ अंग्रेजी हुई बस इतना मान लीजिए यूजर डिफाइंड रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम अ डेटाबेस है जो अनप्लान्ड है, मतलब और इमीडिएट और यूनिक नीड्स के लिए चाहिए। प्री डिफाइंड ये सब नहीं है इसमें कुछ भी। चलिए, अचानक से जो रिक्वेस्ट आ गई, समझ गए, इमीडिएटली आपको भी आपने कुछ आपके जैसे बोल देते हैं क्या एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। हाँ जी, आपका आपने अपना आपका टाइम टाइम का आप हो 10th क्लास में, आपका टाइम टेबल आ गया स्कूल की तरफ से 10th क्लास स्टार्ट होने से पहले। आपने देखा एक भी गेम्स पीरियड नहीं है, एक भी गेम्स पीरियड नहीं है ना। आपको पहले से नहीं पता था कि आपके टाइम टेबल में गेम्स पीरियड नहीं होगा। आप लड़ाई करने चले गए टीचर से, पीटी टीचर से, कि भाई गेम्स पीरियड एक आधे घंटे का 1 घंटे का तो डलवाओ प्लीज, है ना, हम लोग ऐसे पक जाएंगे बैठे बैठे। समझ रहे हो, हमें कुछ खेलना है, चुस्ती नहीं रहेगी शरीर में, ढीला पड़ जाएगा। तो फिर पूरा मतलब पूरी बॉडी ढीली पड़ जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा खेल कूद की जरूरत है हमें। तो आप गए, आपने लड़ाई की, आपकी अनप्लान्ड रिक्वेस्ट थी, आपकी अनप्लान्ड आलोचना थी। तो ये एक तरह से एड हॉक क्वेरी हो गया, इमीडिएट आपको सॉल्यूशन चाहिए था इसका, समझ गए। let's go. The premise is that the entire can be processed, but this is its power. Okay. That results in a reasonable time and it's transformative. ठीक है। It that changes the way you think about data and unlocks data that was previously archived on tape or disk. It gives people the opportunity to innovate with data. That questions that took too long to get answered before can now be answered, which in turn leads to new questions and new insights. For example, Mail Trust, Rackspace Mail Division used Hadoop for processing mail logs. One ad hoc query they wrote was to find the geographic distribution of their users. In other words, मतलब इन्होंने ईमेल लॉग्स की ईमेल ढंग से गया कि नहीं, शायद लॉग्स होते हैं ना कि एरर लॉग्स होते हैं, ईमेल लॉग्स भी ऐसे ही कुछ होते हैं। अब एक बार ईमेल लॉग्स भी सर्च कर लें थोड़ा और क्लैरिटी के लिए। ऑल्दो आई नो व्हाट इज एन ईमेल लॉग, contain email data on each message that has been sent including the sender's address, receiver's email address, timestamp and any other codes। ठीक है, तो इससे क्या मिला, इन लोगों को जियोग्राफिक डेटा अपना मिल गया यूजर्स का। इस सिंपल लॉग से जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की कहां से सबसे ज्यादा इनके यूजर्स हैं, किस एरिया से, ये इनको पता चल गया। तो वहां पे ये फोकस कर सकते हैं। दिस डेटा वाज सो यूजफुल that we have scheduled the MapReduce job to run monthly and we will be using this data to help us decide which Rackspace data centers to place new mail servers in as we grow। कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करके हमें और मेल सर्वर्स लगाने हैं, क्योंकि किसी जगह आपके मेल की जरूरत है नहीं, किसी जगह आपके मेल की क्या बोलते हैं उतनी नीड नहीं, उस जगह लोग इस्तेमाल नहीं करते मेल। चिट्ठी पत्तर से आपके जाते हैं, खत जाते हैं, उधर मैसेज जाता है, तो वहां पे आपकी क्या जरूरत है मेल की, है ना, पुराने जमाने के जहां लोग रह रहे हैं। तो आप क्या करें, अब जहां मेल लोग यूज करते हैं एडवांस मॉडल लोग हैं जहां, है ना, जेनजी, तो जेनजी नहीं, वैसे 10 साल पहले ही मेल बहुत यूज होता था, लाइक वो आर लिटिल बिट अवेयर ऑफ हाउ टू सेंड अ मेल। तो वहां आप जान सकते हो कौन से एरिया के लोग यूज करते हैं और वहां अपने मेल सर्वर्स डाल सकते हो। इसका मतलब यही है, हमने जो इनके लिए मतलब था, ठीक है, इन जो मेल वालों के लिए, रैकस्पेस वालों के लिए, by bringing several hundred gigabytes of data together and having the tools to analyze it, the Rackspace engineers were able to gain an understanding of the data they otherwise would never have had. And furthermore, they were able to use what they had learned to improve their service for their customers। ठीक है, समझ आया। बियॉन्ड बैच
For all its strength, MapReduce is fundamentally a batch processing system and it is not suitable for interactive analysis. You can run a query and get results back in a few seconds or less. पहले मैं इसको इधर करता हूँ, ठीक है? ओके, टाइम लगता है मैंने MapReduce में टाइम लगता है, इतना आप जान लो. Queries typically take minutes or more, so it's best for offline use where there isn't human sitting in the processing loop waiting for results. अच्छा, MapReduce जैसी चीज है ना यार, ये क्या बोलते हैं, देखो क्या होता है इसमें, बहुत जल्दी आपको 2-3 सेकंड में आंसर नहीं मिलेगा, आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे आपको क्वेरी का आंसर लगने के, चाहे ऐड हो या कोई भी क्वेरी हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. और इसलिए ये उस जगह के लिए ठीक है जहाँ इंसान नहीं है, बस कंप्यूटर है और वो काम कर रहे हैं एक साथ. इंसान होगा तो इरिटेट हो जाएगा उधर बैठे बैठे रिजल्ट का इंतजार करते करते, इसलिए टाइम लगता है इसमें, इतना आप जानो, ठीक है? रिजल्ट का इंतजार नहीं करना. However, since its original incarnation, Hadoop has evolved beyond batch processing. शिवम शिवम डिस्टर्ब हो रहा है क्या? बता देना तो. However, since its original incarnation, Hadoop has evolved beyond batch processing. Indeed, the term Hadoop is sometimes used to refer to a larger ecosystem of projects. ठीक है, not just HDFS and MapReduce that fall under the umbrella of infrastructure for distributed computing and large-scale data processing. Many of these are hosted by Apache Software Foundation, which provides support for a community of open source software projects, including the original HTTP server from which it gets its name. ठीक है, the first component to provide online access was HBase. अच्छा, and a key value store that uses HDFS for its underlying storage. HBase provides both online read-write access of individual rows and batch operations for reading and writing data in bulk. Okay. HBase क्या है? की वैल्यू स्टोर है जो HDFS को यूज करता है फॉर इट्स अंडरलाइंग स्टोरेज. HBase दोनों प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन रीड राइट एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल रोज and batch operations for reading and writing data in bulk, making it a good solution for building applications all. The real enabler for new processing models in Hadoop was the introduction of Yarn. अच्छा, yet another resource negotiated in Hadoop 2. In Hadoop 2, Yarn is a cluster 2.0x जो version है Hadoop का. Yarn is a cluster resource management system which allows any distributed program, not just MapReduce, to run on data in Hadoop cluster. अच्छा, which okay, ठीक है, सिंपल, सिर्फ MapReduce को अलाउ नहीं करता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम होगा उसको अलाउ करेगा, है ना? In the last few years, there has been a flowering of different processing patterns that work with Hadoop. Here is a sample. Interactive SQL. By dispensing with MapReduce and using a distributed query engine that uses dedicated always on daemons like Impala or container reuse like Hive on Tez है, ये Tez. It's possible to achieve low latency responses for SQL queries on Hadoop by still scaling up large dataset sizes. मतलब Hadoop के जो SQL queries का response time है ना, वो चलते कम कर देता है MapReduce, ठीक है? इतना समझो. Iterative processing. Many algorithms such as those in machine learning are iterative in nature, so it's much more efficient to hold each intermediate working set in memory compared to loading from disk on each iteration. The architecture of MapReduce does not allow this. Okay. Each immediate working set in memory compared to loading from disk on each iteration. ठीक है, split करने का बोल रहा है. The architecture of MapReduce does not allow this, but it's a straightforward with Spark, for example, and it enables a highly exploratory style of working with datasets.
ओके ओके ओके। कुछ है मैप रेड्यूस का जो आर्किटेक्चर है वो अलाउ नहीं करता कि इंटरमीडिएट वर्किंग सेट में हम लोग कल इंस्टेड ऑफ पूरे डिस्क को हम यूज कर सके। लेकिन अगर स्पार्क के साथ यूज करा जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पार्क, तो ऐसा एक्सप्लोरेटरी कुछ स्टाइल है जो वर्किंग विद डेटा सेट यूज करा जा सकता है। पता नहीं, कुछ कुछ तो बोल दिया बहुत ज्यादा अंग्रेजी। स्ट्रीम प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग सिस्टम्स लाइक स्टॉर्म, स्पार्क स्ट्रीमिंग और समझा समझा make it possible to run real-time distributed computations on onboard stream of data and emit results to Hadoop storage and external systems. Search. The Solar Search platform can run on a Hadoop cluster, indexing documents as they are added to HDFS. अच्छा. And serving search queries from indexes stored in HDFS. अच्छा ठीक है. सर्च क्वेरीज फ्रॉम इंडेक्सेस स्टोर्ड इन HDFS. अच्छा ठीक है ठीक है, ये बात करी गई है। Despite the emergence of different processing frameworks on Hadoop, MapReduce still has a place for batch processing, and it is useful to understand how it works since it introduces several concepts that apply more generally, like the idea of input formats and how a dataset is split into pieces. इसमें और क्या है? Querying or your beyond batch relation data mesh system. कंपैरिजन मेरे को अभी नहीं देखने का मन है। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों देखूं दूसरे सिस्टम से कंपैरिजन? मैं आरडीबी में पढ़ने आया हूँ, इधर आरडीबी में पढ़ने आया हूँ। नहीं ना। रीड वंस राइट वंस रीड मेनी टाइम्स। अच्छा। आरडीबी में नहीं पढ़ने आया ना, ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ने आया हूँ ना, मैं वॉलंटियर कंप्यूटिंग पढ़ने आया हूँ। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अपाचे हडूप। क्यों हिस्ट्री क्यों जाननी मुझे? क्यों जाननी? नच अच्छा। ये कुछ आप बचाया था, इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ देते हैं थोड़ा सा। हडूप वॉज क्रिएटेड बाय, ये गाइस क्योंकि आज हमारा जिक्र हुआ था इसका क्लास में। Hadoop was created by dog cutting. Oh, dog cutting. Oh guys, इसको हिंदी में मत परिवर्तन करिएगा इसका। The creator of Apache Lucene. Oh, the widely used text search library. Hadoop has its original script in Apache Nutch, an open source web search engine, and itself a part of the Lucene project. अच्छा, the name Hadoop is not an acronym. It is made up name. The project creator dog cutting explains how the name came over. The name my kid gave us a stuffed yellow elephant. Short, easily, relatively easy to spell and pronounce, meaningless, and not used elsewhere. Those are my naming criteria. Kids are good at generating search. Google is a kid's term. अच्छा, Google is a kid's term. Projects in the Hadoop ecosystem also tend to have names that are unrelated to their function, often with an element or other animal theme. Pig, for example. Pig एक नाम है Hadoop के किसी फंक्शन इकोसिस्टम में कुछ प्रोजेक्ट का, उसका नाम पिग है। बाप रे। सुअर। Small components are given more descriptive and therefore more mundane names. This is good example principle, as it means you can generally work out what something does from its name. For example, the name node manages the file system namespace. Building a web search engine from scratch was an ambitious goal, but for not only the software required to crawl and index complex websites, websites complex to write, ठीक है, but it's also a challenge to run without a dedicated operations team, since there are so many moving parts. It's expensive to Mike Caffarella and dog cutting, है ना,
estimated a system supporting a 1 billion page index would cost around $500,000 in hardware with a monthly running cost of 30,000. Nevertheless, they believe it was a worthy goal as it would open up and ultimately democratize search engine algorithms. ठीक है, कुछ हिस्ट्री की बात हो रही है, नच की बात पढ़ने आया था, हिस्ट्री पढ़ने लग गया मैं, थोड़ा बहुत नच का ही पढ़ूंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। नच वॉज क्रिएट स्टार्टेड इन 2002। अच्छा, मैं पैदा इस साल हुआ था गाइज, वैसे आप लोगों से बहुत को लोग भी पैदा हुए होंगे इस साल। And a working crawler search system quickly emerged. However, its creator realized that the architecture wouldn't scale to the billions of pages on the web. Help was at hand with the publication of first a paper in 2003 that described the architecture of Google distributed file system. Acha, GFS, which was being used in the production of Google. GFS or something like it would solve the storage need for the very large files generated as part of the web crawler indexing process. मतलब सर्च इंजन बनाने के प्रोसेस में ये लोगों ने बहुत तगड़ा स्टोरेज बना दिया। देखो, कुछ बनाने चले थे, कुछ और ही तगड़ा बना के चले गए। कितना मस्त चीजें हो रही हैं दुनिया में, सब गॉड्स प्लान है भाई, गॉड्स प्लान एवरीथिंग। कुछ ऐसा नहीं जो गॉड्स प्लान नहीं है। आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, सब गॉड्स प्लान। In particular, GFS would free up time being spent on administrative tasks such as managing structured nodes, storage nodes. ये क्या मतलब हुआ इसका? टाइम बे अच्छा ठीक है। In 2004, Nudge developers set about writing an open source implementation, the Nudge distributed file system. In 2004, Google published the paper that introduced MapReduce to the world. In 2005, the Nudge developers had a working MapReduce implementation in Nudge, and by the middle of that year, all the major Nudge algorithms had been imported to run using MapReduce and NDFS. NDFS and the MapReduce implementation in Nudge were applicable beyond the realm of search, and in February 2006, they moved out of Nudge to form an independent sub-project of Lucene called Hadoop, and at around the same time, Doc Cutting joined Yahoo, which provided a dedicated team and the resources to turn Hadoop into a system that ran at web scale. See the following sidebar. This was demonstrated in February 2008 when Yahoo announced that its production search engine was being generated by 10,000 core Hadoop cluster. Building internet scale search engine requires Hadoop at Yahoo huge amounts of data and therefore large number of machines to process it. Yahoo search consists of 4 primary components: the crawler, which generates pages from web servers; the web map, which builds a graph of the known web; the indexer, which builds a reverse index to the best pages; and the runtime, which answers user queries. The web map is a graph that consists of roughly 1 trillion 10 to the power 12 edges, each representing a web link. बाप रे, इतना बड़ा ग्राफ, और हम लोग कुछ 2-4-5 ग्राफ के नोट्स में ही फटने लगती है यार डीएसए में। And 100 billion 10 to 11 nodes, each representing distinct URLs. Creating and analyzing such a large graph requires a large number of computers running for many days. In early 2005, the infrastructure for the web map, named Dreadnought, needed to be designed to scale up more nodes. Dreadnought had successfully scaled from 20 to 600 nodes, but required a complete redesign to scale out further. Dreadnought is similar to MapReduce in many ways, but provides more flexibility and less structure. In particular, each fragment in a Dreadnought job could send output of each of the fragments in the next stage of the job, but the sort was all done in the library code. In practice, most of the web map phrases were pairs that correspond to MapReduce. अच्छा ठीक है। Therefore, the web map applications would not require extensive refactoring to fit into MapReduce. यहाँ पे लगता है हमने खत्म इतनी भी हिस्ट्री नहीं, यहाँ खत्म करते हैं। ये Hadoop फंडामेंटल्स है। मीट Hadoop, MapReduce, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड
System Yarn 5, Part 2 MapReduce. Developing a MapReduce application, how MapReduce work, MapReduce types and formats 9, MapReduce features. Part 3, ये बुक का ओवरव्यू है क्या? ये बुक का ओवरव्यू है. Hadoop operations, setting up a Hadoop cluster, administrating Hadoop. Part 4, related projects, data formats, Avro, Parquet, data ingestion, Flumes, Cube, data processing, Pig, Hive, Crunch, Spark, storage, HBase, coordination, Zookeeper. Case 5, Part 5, case studies, composable data at Cerner, biological data science, saving lives with सॉफ्टवेयर कैस्केडिंग. इंटरेस्टिंग तो है यार ये सब. मजा तो आएगा, देखते हैं स्टेप. ठीक है, मजा तो आने वाला है. ठीक. स्ट्रक्चर ऑफ द बुक, देयर आर वेरियस पाथवेज टू द कंटेंट. ठीक. अब हम आएंगे. मैं प्रोड्यूस पढ़ने से पहले हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं गाइस.
गाइस वापस आ गए, वी आर बैक। और क्या बोलते हैं, जिस काम के लिए गया था फाइल ट्रांसफर के लिए, वो कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वी आर कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। लेट्स कम बैक। एक व्यूअर है, कोई कौन है दिख रहा है चैट में, बताओ प्लीज टेल इन द चैट हु आर यू। थोड़ा आपका स्वागत करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विथ मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या करता है? मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डेटा प्रोसेसिंग। द मॉडल इज सिंपल yet not too simple to express useful programs in Hadoop. अच्छा, useful programs in अच्छा, Hadoop can run MapReduce programs written in various languages. In this chapter, we look at the same program expressed in okay, Java, Ruby, and Python. अच्छा, तीन languages में. Most importantly, MapReduce programs are inherently parallel, thus putting very large-scale data analysis into the hands of anyone with enough machines at their disposal. MapReduce comes into its own for large data sets. So let's start by looking at one weather data set. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन देख रहा है? एक अब देख रहा है, देखो भाई चैट में ही बताओ कौन हो। ठीक है, तो फॉर आर एग्जाम्पल वी विल राइट अ प्रोग्राम दैट माइंस वेदर डेटा। माइंस वेदर डेटा, माइनिंग वेदर डेटा क्या होता है? माइनिंग वेदर डेटा, क्वाइट साउंड्स इंटरेस्टिंग। माइनिंग वेदर डेटा, data mining techniques to analyze meteorological and extract valuable insights for applications like weather forecasting, climate studies, and improving decision making in industries like agriculture and mining. ओके समझ गया, meteorological data basically guys. ठीक है, ओके हम्म ओके ओके वेदर ओके weather sensors collect data every hour at many locations across the globe and gather a large volume of log data, which is good candidate for its analysis with MapReduce because we want to process all the data and the data is semi-structured and recorded data. log data अभी हमने देखा था, है ना, जो like it's data only, like एड्रेस होता है, वो वहाँ पे एड्रेस था ना, यहाँ पे कुछ कुछ होगा. The data we will use is the National Climate Data Center. अब जीरो हो गए, अचानक से जीरो हो गए. नेशनल क्लाइमेटिक डेटा सेंटर or NCDC. The data is stored using a line-oriented ASCII format in which each line is a record. एक मिनट का इसमें कुछ चेक कर रहा हूँ. हाँ, in which each line is a record. The format supports a rich set of meteorological elements, many of which are optional or with variable data or with variable data range. For example, for simplicity, if we focus on basic elements such as temperature, which are always present under a fixed bit. Example 2.1 shows a sample line with some of the salient fields annotated. अच्छा देख लीजिए एग्जाम्पल. अरे बाप रे, ये क्या है? जे का देख लियो. अरे मरे, अरे मोरी मैया, जे का देख लियो. लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एलिवेशन, विंड डायरेक्शन, क्वालिटी कोड, स्काई सीलिंग हाइट, क्वालिटी कोड, visibility distance, quality code, air temperature, quality code, dew point temperature, quality code, atmospheric pressure, quality code. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें. So data files are organized by date and weather station. There is a data from each year from 1901 to 2001, each containing a gzipped file for each weather station and with its readings. नहीं यार, ये मत कर. हाँ, with its readings for that year. For example, here are the first entries for 1990. अच्छा ठीक है, ओके जी जिप फाइल है. अच्छा ls raw 1990 head. अच्छा ठीक है. There are tens of thousands of weather stations, so the whole data set is made of large number of relatively small files. Okay, it is generally easier and more efficient
to process a smaller number of relatively large files, so the data was pre-processed so that each year's readings were concatenated to a single file. This means by which this was carried out as is described. अच्छा, ये कैसे ऐसे gz फाइल्स में बना? इतना बहुत सारा डेटा 1901 से 2001 का सिर्फ इतने से gz फाइल में, हर एक gz फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है गाइस, हर एक gz फाइल बहुत ज्यादा बड़ी है। ये कैसे बना, ये डिस्क्राइब्ड है अपेंडिक्स सी में। Analyzing the data with Unix tools, what's the highest recorded global temperature for each year in the data set? Okay, we'll answer this first without using Hadoop. Okay, as this information will provide a performance baseline and useful means to check our results. अच्छा, okay, the classic tool for processing line oriented data is awk. For example, 2.2 is a small script to calculate the मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर ईच ईयर। अच्छा, ये पाइथन प्रोग्राम लग रहा है, अभी कुछ तो लग रहा है, बैश का प्रोग्राम लग रहा है। अच्छा, और ईयर इन ऑल कुछ है। टेम्प इक्वल टू सबस्ट्र 0885 क्यू इज इक्वल टू सबस्ट्र 0931। अच्छा, ठीक स्क्रू स्क्रू बोल रहा हूँ। हाँ, हो रहा है। हाँ, द स्क्रिप्ट लूप्स थ्रू द कंप्रेस्ड ईयर फाइल्स। ठीक है, ईयर फाइल्स में कहते हैं लूप कर रहा है। फर्स्ट प्रिंटिंग द ईयर एंड प्रोसेसिंग द ईच फाइल यूजिंग awk। ठीक है, awk स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्ट टू फील्ड्स, एक तो टेम्परेचर वैल्यू हो गई और क्वालिटी कोड हो गया। ठीक है, जो सब एसटीआर में इसने कर रखा है। ठीक है, द एयर टेम्परेचर वैल्यू इज कन्वर्टेड टू अ इंटीजर बाय एडिंग 0। ठीक है, ओके next a test is applied whether the temperature is valid। 9 temperature is not equal to 99999 नहीं हो सकता है ना। the value 999 signifies a missing value in the NCDC dataset। ठीक है, and whether the quality code indicates that the reading is not suspect or erroneous। अच्छा, ये कुछ कंडीशन एक और है। okay, if the reading is okay, the value is compared with the maximum value seen so far। okay, so which is updated if a new maximum is found। the end block, अच्छा, मैक्सिमम अपडेट करा जाता है अगर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन मैक्स हुआ तो मैक्स इक्वल टू टेम्प। सिंपल, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन मैक्स हुआ ना, तब ये कर रहे हैं हम लोग मैक्स इक्वल टू टेम्प। समझ रहे, सिंपल लॉजिक ही है कि आपने टेम्परेचर ग्रेटर देन मैक्स लिखा तो मैक्स इक्वल टू टेम्प, या लॉजिक ही है सिंपल। अच्छा, ठीक है, हियर इज द बिगिनिंग ऑफ अ रन। अच्छा, सबसे मैक्स टेम्परेचर हमें मिल गया। ओके, हर ईयर का सबसे मैक्स टेम्परेचर मिल रहा है हमें हर ईयर में। The temperature values in the source file are scaled by a factor of 10, so this works out about as a maximum temperature of 31.7 degree Celsius for 1901। There were very few readings at the beginning of the century, so this is plausible। The complete of this for the century took 42 minutes and 1 on a single EC2 high CPU extra large instance। अच्छा, to speed up of the processing, we need to run parts of the program in parallel। In theory, this is straightforward। We could process different years and different processes। अच्छा, ठीक है, using all this the available hardware threads on a machine। There are few problems with this, however। अच्छा, first is the dividing the work into equal size pieces isn't always easy or obvious। In this case, the file size for different years varies widely, so some processes will finish much earlier than others. Even if they pick further work, the whole run is dominated by the longest file। अच्छा, okay। Ah, so different years varies widely.
So some processes will finish much earlier than others, even if they pick up further work. अच्छा अच्छा, कुछ ईयर्स का, जैसे 1901 हो गया और जैसे 2001 हो गया, ठीक है, इसमें, या फिर 1900 ही हो गया, ठीक है, और 2001 ले लिया। नाउ देयर इज अ थिंग हियर, और या कि कुछ साल होंगे जिनका डेटा बहुत बड़ा होगा। 1901 का पिक कर लिया और 2001 का, मान लीजिए कि 1901 का डेटा बहुत बड़ा है, 2001 का छोटा है, तो 1901 का प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, एज कम्पेयर टू 2001, भले ही आपने ईयर्स में डिवाइड कर दिया हो। Even if they pick up further work, the whole run is dominated by the longest file. A better approach, although one that requires more work, is to split the input into file-sized chunks and assign each chunk your process. अच्छा, जो हमारा इनपुट भी है ना, उसको और स्प्लिट करके फाइल साइज चंक्स में बना दिया जाए और हर एक चंक को एक प्रोसेस। सेकंड, कंबाइनिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस may require further processing. In this case, the result for each year is independent of other years. Okay, ठीक है, result of each year is independent of other years. हाँ, ये तो सही है, हर हर साल का जो रिजल्ट है वो बाकी सालों से डिफरेंट रहेगा, एंड दे में बी combined by concatenating all the results and sorting by year. ओके 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 ओके, ठीक है, the results and sorting by year. if टाइम किसे लग रहा है इसमें, if using the fixed size chunk approach, the combination is more delicate. अच्छा, for example, data for a particular year will be typically और split कर दिया डेटा को, we split into several chunks, each processed independently. We will end up with a maximum temperature for each chunk. So the final step is to look for the highest of these maximum for each year. मतलब एक साल को आपने 1901 को उठाया, उसको आपने 5 चंक में बांट दिया, ठीक है, 5 चंक में बांटा। नाउ उस वो 5 चंक्स में जो भी टेम्परेचर आया, मान लीजिए T1, T2, T3, T4, T5, इन सब का मैक्सिमम आप लोगे तो आपको 1901 का मैक्सिमम टेम्परेचर पता चलेगा, ठीक है। थर्ड, you are still limited by the processing capacity of a single machine. If the best time you can achieve is 20 minutes with the number of processor you have, then that's it. You can't make it go faster. कुछ processors की लिमिट होती है, उतना आप नहीं कर सकते, इतने सारे प्रोसेस नहीं बना सकते। Okay. Also, some data sets grow beyond the capacity. हाँ, कुछ डेटा सेट होते हैं वो एक मशीन पे बहुत भारी पड़ जाएंगे, उनका डेटा ही बहुत ज्यादा बड़ा है ना। और जब बहुत सारी मशीन्स को हम यूज करना स्टार्ट कर जाएंगे, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी आएंगे, मतलब अपने पूरे चलते हैं जो एनवायरमेंट है, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग मल्टीपल मशीन्स, अ whole of host of other factors come into play, mainly falling into the categories of coordination and reliability. Who runs the overall job? How do we deal with failed process? So although it's feasible to parallelize in processing, in practice it is messy. Using a framework like Hadoop to take care of these issues is a great help. पैरेललाइज कर सकते हो प्रोसेस को, लेकिन मेसी हो सकता है ये, तो Hadoop क्या करेगा देखते हैं। To take advantage of the parallel processing that Hadoop involves, we need to express our query. अच्छा, तो Hadoop हमारे पैरेललाइजिंग इजी करता है। अच्छा, लगता है मेरा कुछ फाइल ट्रांसफर हो रहा था गाइस, वो होने वाला है कंप्लीट। हाँ, होने वाला है, हो ही गया, सारे आ गए इमेजेस, सारे आ गए इसके अंदर। ओके, लेट्स सी कितनी स्टोरेज बाकी है। ठीक है, कौन है ये?
कौन? गाइस ये भूत आ गया क्या? फोन बजा के चला गया गाइस। आते वापस। Analyzing the data with Hadoop to take advantage of the parallel processing that Hadoop provides, we need to express our query as a MapReduce job. After some local small scale testing, we will be able to run it on a cluster of machines. Okay, ठीक है। MapReduce works by breaking the processing into two phases, the map phase and the reduce phase. अच्छा, each phase has key value pairs as input and output, ठीक है, of the types of which may be chosen by the programmer. The programmer also specifies two functions, the map function and the reduce function. Acha, the input to our map phase is the raw and CDC data. We choose a text input format that gives us each line in the data set as text value. Okay. The key is the offset of the beginning of the line and the beginning of from the beginning of the file. But as we have no need for this, we ignore this. Acha. ओके, ऑफसेट ऐसे दे रहे हैं, ये काउंट करके जीरो कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 106 कैरेक्टर्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 212 कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हो गए, यहाँ पे टोटल यहाँ मिला के, फिर यहाँ मिल इतना तक मिला के आपके 318 हो गए, इतने तक मिला के, मतलब यहाँ से लेके पता नहीं जहां तक जा रहा है, ये 106 कैरेक्टर्स है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जितना जा रहा होगा वो 212 कैरेक्टर्स है, फिर आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 318 कैरेक्टर्स है। समझ गए आप आसानी से? अब मैं बताता हूँ मैप रिड्यूस क्या करता है। मैप रिड्यूस वर्क करता है बाय ब्रेकिंग द प्रोसेस इनटू टू फेजेस, द मैप फेज और रिड्यूस फेज। ईच फेज हैज की वैल्यू पेयर्स एज इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, द टाइप्स ऑफ व्हिच मे बी चोजन बाय द प्रोग्रामर। ओके, द प्रोग्रामर आल्सो स्पेसिफाइज टू फंक्शन, द मैप फंक्शन एंड द रिड्यूस फंक्शन, ठीक है। द इनपुट टू आवर मैप फेज इज द रॉ एनसीडीसी डेटा, ठीक, और इसके लिए आपने टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट चूज किया है, दैट गिव्स अस ईच लाइन इन द डेटा सेट एज अ टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। The key is the offset of the beginning of the line from the beginning of file, but as we have no need for this, we ignore it. अच्छा, the our map function is simple. अभी तो यूज किया तूने की का, है ना, यहाँ पे यूज किया की का। Our map function is simple. We pull out the year and the air temperature because these are the only fields we are interested in. Okay, okay. And uh, air temperature. हाँ जी, year and because these are the only fields we are interested in. In this case, a map function is just a data preparation phase, setting up the data in such a way that the reduce function can do its work on it, finding the maximum temperature for each year. Reduce function का काम है यहाँ पर maximum temperature find करना for each year. The map function is also a good place to drop priority records. Here you filter out temperatures that are missing, suspect और anonymous. अच्छा, यहाँ से वो वाले टेम्परेचर हटा दिए जाएंगे जो अभी जिनका पता नहीं है, जो या तो गुम है ना, जो या तो थोड़ा सस्पिशियस है या फिर एरोनस मतलब खराब है, मतलब इनकम्प्लीट है ना। तो to visualize the way the map works, consider the following sample lines of input data. Some unused columns have been dropped to fit the page, indicated by ellipses. अच्छा, okay. The lines are presented to the map function as key value pairs, ठीक है। These keys are the line offsets within a file which we ignore in our map function, ठीक है। The map function merely extracts the years and the air temperature, okay, and emits them as the output. ये जो 006 ये सब देख रहे हो ना भाई गाइस, ये सब कॉलम है आपके, ये सब कॉलम है, ये सब आपके कॉलम है, इतने सारे कॉलम है, बाप रे। 106 कॉलम है, 106 कॉलम है इसमें, और 106 इंटू 212, 106 इंटू 3, 318 ऐसे चल रहा है आपका, ठीक है।
और ये तो हमने ऑफसेट देख लिया, और इसका आउटपुट होगा, है ना, कि द टेम्परेचर वैल्यू चलते द ईयर एंड चलते टेम्परेचर इंडिकेटेड इन बोल्ड टेक्स्ट एंड इमिट्स देम एज द आउटपुट। और इन सब का हमें मैक्स निकालना है, 1950 का है मैक्स निकालना, 1949 का मैक्स निकालना है, ऐसे हमारा आउटपुट बनेगा। द आउटपुट फ्रॉम द मैप फंक्शन इज प्रोसेस्ड बाय द मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क बिफोर बीइंग सेंट टू द रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, ओके, बिफोर बीइंग सेंट टू द रिड्यूस फंक्शन। तो ये क्या करेगा, ये जो मैप रिड्यूस फंक्शन फ्रेमवर्क है इस डेटा को शफल कर देगा और काइंड ऑफ सॉर्टिंग कर देगा इस डेटा की, कुछ हल्की सी शफल सॉर्ट कुछ तो करेगा, है ना। सो ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ईयर के साथ एक एरे टाइप का बना देगा, इटरेबल बना देगा, जिस जिस इटरेबल पे आप इटरेट करके आप टेम्परेचर्स पे मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, दिस प्रोसेसिंग सॉर्ट्स एंड ग्रुप द की वैल्यू पेयर्स बाय की। So continuing the example, our reduce function sees the following output. Each year now appears with a list of all its air temperature readings. All the reduce function Kyle Crane. Oh, shuffle means shuffle यार, जैसे गड्डी होती है ना ताश के पत्तों की, आप शफल कर देते हो रैंडम, मतलब एक इधर उधर ऊपर एक नीचे, है ना, डेक ऑफ कार्ड्स यू शफल इट, है ना। सिमिलरली हेयर व्हाट इज हैपनिंग ना, टेम्परेचर्स हो गए, उनको रैंडम शफल कर दिया, ठीक है, रैंडम शफल कर दिया उनको। और जैसे यहाँ पर टेम्परेचर्स और ईयर्स को रैंडम शफल करके फिर उनको सॉर्ट किया, मतलब विद अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, लाइक पहले ईयर वाइज सॉर्ट कर दिया होगा 1901, फिर टेम्परेचर वाइज सॉर्ट कर दिया होगा, है ना। लाइक होता है ना, सॉर्ट बाय फर्स्ट दिस क्राइटेरिया देन सॉर्ट बाय दिस क्राइटेरिया। तो पहले ईयर से कुछ हुआ होगा सॉर्ट, बैकवर्ड सॉर्ट, 1950 1950 1950, फिर 1949 1949, फिर 1948 1948, फिर टेम्परेचर से हमारा कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से। अभी क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा क्या क्राइटेरिया इन लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे जैसा भी क्राइटेरिया आपने लिया है 111 78, कोई क्राइटेरिया लेके सॉर्ट किया होगा, सम सॉर्टिंग क्राइटेरिया। शफलिंग मीन्स लाइक रैंडमली अरेंजिंग द डेटा। काइल क्रेन, ओके ओके ओके, like you are if you are not Indian, bro, then or then still, bro, I will explain, try my best, my English is not so good. So what did I say? Once more I will repeat. Shuffling is just randomly arranging the data. Sorting you already know. Okay, now अगर इसमें और if you want to go in more detail, शायद यहाँ लिखा होगा map reduce shuffle. Let's see. Shuffle transfers the map output from mapper to a reducer in map reduce dot sort phase. अच्छा, हाँ, तो that's what I was saying ना, it will like transfer the output to map reducing sort phase. First it will rearrange it and transfer it. Map covering the merging and sorting of map outputs, है ना। अगर yeah, one thing I did, my teacher told me, bro. So mapper we try na, mapper, yeah, what happens here, I will show you. No, no, not here, not mapper, it is map reduce, I think so. Map reduce, one viewers, okay, you are still viewing, nice. Let me just search Apache. Here it was giving something, yeah, mapper reducer. Okay, map reduce merge sort, I think it was.
हाँ, yeah. See, this क्या बोलते हैं algorithm sorting is done in MapReduce है ना, merge sort is the default feature of MapReduce. One cannot change the MapReduce sorting method. So let's come back. Now I got to remember what I learned. See, what will happen, this data would be split into two equal halves. Okay, this is the shuffling part. What the fuck, I think I went too far. Just a second. Yeah, so this data is split into two halves, equal halves. No matter how big the data is, they will be split into equal halves, and some kind of recursion will happen. This part is like the shuffling part. Now the next part is, how does merge sort work? It will like choose a criteria for sorting, either year or temperature, and according to the criteria it will use recursion to sort the parts, which like the first part and the second part, and then they will combine the sorted parts to come up with this, the year and an iterable, and the iterable will contain the temperatures or whatever values, like it will contain the values in the form of iterable, like an array. This is the key and the values in the form of iterables for the key. Okay, did you understand, bro? Like something, can you just ping me back? Did you understand it? Okay, I think no response. I would take it as a yes. Okay. Each year appears with the list of all its air temperature readings. All the reduce function has to now do is iterate through the list and pick up the maximum reading. ठीक है. So it can iterate through the list and pick out the maximum reading. For here it is 111 for now, 1949, and for here it is 22, as you can see. Yes, brother. Oh, you understood. Good. Nice. This is the final output. Okay. Yeah, we got 111 and 22 as we said. This is the final output, the maximum global temperature recorded in each year. Okay. So here we can see our input, first the raw data, then we check the number of columns for each. Like the number of columns were here 106. We took it as the offset. Then we converted into the like whatever we needed from the data. Like we don't need to take all the 106 columns. We will take the year and the temperature out of it and using the mapper. Okay. Then here it happens the shuffle and sort algorithm using the uh, which ones does that? Uh, okay, mapper does the sorting. Okay, mapper does the sorting and shuffling. Like as you can see here, 1949, 111, 78, 1950, 0, 22, 19, 1 and minus 11. Reduce, what it does, it derives the actual output from the shuffling and sorting. I think we should look at it once again because it will be beneficial for us only. So still one viewer, nice. I will look at it once again. Okay. So map reduce works by, फिर से revise कर रहे हैं, we are revising again. Two phases, map phase and reduce phase. Each phase has key value pairs at input and output, the types of functions, the types of which may be chosen by the programmer. The programmer also specifies the two functions, map function and reduce function. Okay. The input to our map phase is the raw and NCDC data. We choose the text format and each given to us, each line in the data set at text value. The key in the offset of the beginning of the line from the beginning of the file, but we need to ignore this because बाद में हम लोग, what we will do later is, this is from these columns we will pick one column and one like value, key value, and we will go further. Okay.
Our map function is simple. We pull out the year and the air temperature. Oh, map does only this thing. Map does only this thing. See, I remember. Map does only like picking out the key and value pairs from this. Key and value pairs from this. From this to this, coming from this to this is a mapper is involved. But coming from this to this, reducer is involved. Okay, reducer is involved. Or you can say map function. Instead of mapper, you can say from this to this, map is involved, and from this to this, and from this to this, reduce function is involved. Okay, let's read it again. Okay, a map function is simple. We pull out the year and the air temperature because these are the only fields we are interested in. What it is saying, from this thing, from these key value pairs, we extract the year temperature because we are only interested in that only. Okay. In this case, the map function is the data, just the data preparation phase, setting up the data in such a way that the reduce function can do its work on it. What does work here mean? Work means sorting and shuffling. Work means sorting and shuffling. Okay. Shuffling and sorting, you can say in reverse order also. That doesn't make much of a difference. Okay. Next. The map function is also a good place to drop bad records. It's just a data preparation phase. Like you can filter out the bad records which have the data which is missing, which has data which is suspicious or erroneous. Erroneous means incomplete data or like corrupt data, you can say. Okay. To visualize the way the map works, consider the following sample lines of data. So this is just raw data. This is all raw data 060006. This raw data will be prepared and converted into a key value format, like understandable format. Like here must be 106 columns, 106 characters for you can say 106 columns here for us. So it 106 is displayed here as the key for the offset. Then 212, 106 into 2, 106 into 3, 380. You understood? Next, the keys are the line offsets within the file which we ignore in our map function. I know we will ignore it later. The map function merely extracts the year and the air temperature. After giving it key value pair, the map function, what it will do, it will extract from this key value pairs the data that we want, that is the year and the temperature. Okay. Now this output from the map function is processed by the map reduce framework. That is the reduce function before being sent to the map reduce function framework will work on this or this thing, and then it will be sent to the reduce function. This processing. Oh, this map reduce now sorts and groups the key value pairs by key. Okay, so it will sort using merge sort. What did I say? Merge sort. So using merge sort by splitting this whatever, how much long, it can be even bigger than this. This might be 1950, 1949, maybe here it would be 1940, 1943, 1944. This is continuing till here, like it could have been very long. So this long data is split into equal halves, then sorted using recursion, like we do in merge sort, and by the map reduce framework, and then it is sent to the reduce function like this. Okay. Then it is sent to the reduce function. This part map reduce done, sorting and shuffling. Next, each year appears now with the list of temperature function readings. Now reduce function has the only job after the map reduce framework has done this sorting and shuffling and sent it to it, the sorted and shuffled data. What reduce function has to do? It has to iterate through the iterable in each year and give out the maximum temperature. Some sort of task is given to the reduce function. Sometimes it would be to calculate the count. Sometimes it would be to take out the maximum, take out the minimum. Some kind of mathematical task. Okay, some kind of logical mathematical task would be given. Okay. Next we should come to each year appears with a list of all its temperature. Okay. All reduce function now iterate and pick up the maximum reading that we have done. Now come to here. So here what map reducer did, map reducer converted to this. Now this, after map reducer converted it into from the year and temperature to this format, year and iterable. Now year and iterable format is sent to the reduce function.
Now reduce function, what it does, it acts on this. It acts on this. Well, notice my cursor. It acts on this and it converts into the whatever formula, whatever thing you are applying in the reduce function, and it will take out the maximum temperature, and then it will give it as the output. Simple. Now we will see the program Java MapReduce. Having run through the Java MapReduce framework, the next step is to express it in the code. We need three things: a map function, a reduce function, and some code to do the run the job. Okay. I think here the program reduce function will like contain the map reduce plus the reduce function also. Let's just see what will happen. Okay. Mapper for the minimum temperature example. Okay, okay, okay. Hmm. We would need this data, na? I think we would need this data. Uh, like this year and temperature, this whole data we would need from somewhere. NCDC data. Now, where we can get it? The question is where we can get it. Okay, and I may have to log in into my CentOS for showing this. Let me log in, guys. I may take a 10-minute break because meanwhile, I may take, it's not sure, but let's see. And finally, people are viewing. So, Kyle Crane, where are you from, bro? My Cloudera is starting. Just wait a minute. Okay, here we like did some example. I will show you. We'll show you the word count example, Kyle, bro. Why? Why it can be used? Is there somewhere I opened a browser? Why? Where did I open the browser? Oh, somewhere, man, I used, I think the browser, the Firefox browser, I had to close it. Somewhere it is being used. Maybe it's the terminal. No, no, where it is being used. Because I need this, no? It was working in the day, but what is happening now? Just wait with me. Bear with me. I will just set it up first. Workspace launcher dot Java W count is will not run like this. It won't run if okay. Just uh, let me see what is running this. Just a second. First, let's close this thing. Yeah, no. Yeah, this thing is using it. This thing is using it. I will close it ASAP as fast as possible. I closed it. Let me try again. Let me just search it again. Home.cloudera workspace not available. Let me search on the internet what is happening. In the morning, I closed the Firefox and then it started working. Then it started working. But now it is not working. Why the net is hanging so much? I need to just do a simple query. What was the error? What? No workspace error? Okay, well, just a minute. Oh, still viewing. Yeah, nice. I will keep up with you. No matter. Let's go till 1:30. We will set this up first. Okay. Then I will explain you. CentOS sucks. CentOS literally sucks, especially while streaming. But I am trying my best to run it. Oh God.
Is this the speed I deserve? Why she use CentOS like a teacher? Uh, Not here, not here. It's taking so much time. Project. Oh God. No, no, no. Here, not search, navigate. Maybe in navigate it was to set workspace. Go to, no, no, no. Refactor. Maybe refactor. Yeah, refactor. It's, no, source. Yeah, now it's working fast. Edit. Why? Why I'm not finding the workspace? File, switch workspace. No, 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 no. Ah, wrong workspace selected. Now wrong workspace, wrong workspace. Be with me. Yeah. First, let me close this Firefox. Uh, God. Okay. Just 2 minutes. I will set it up. Why every time it is being used, the workspace? Why? God. Mm, I think I'm making the most use of my computer. I have to again like switch the workspace. Let's go to file. Yeah, switch workspace. Other. Yes, I want this one. Yeah, yeah, now it's working. Now it's working, bro. You still there? It's working now. Yeah, still there, bro. Okay, let's come back. Come back, come back, come back, come back. Here I can now explain some things. See, what we have done is first we have created our like we have a task. We have a task at hand. Like we have some text. Like I will show the first. Let me just do something with the text because go to preferences. Code. Okay, edit. I have to increase the font size. Just wait a minute. Won't take much time. This is project run window preferences general and uh, font text font edit and the size I will increase to at least 18. Okay, yeah, now it's better. It is more readable. Now I can show you some things. Yeah, see the multi-line comments. Like if I have some data like learning big data in Hadoop, I am learning big data in Hadoop
learning about Hadoop in big data is so enjoyable, is great, is cool. Okay, बस इतना ही रखते हैं. Learning about Hadoop in big data. So notice something. How many times learning is appearing? Learning is appearing here 3 times. Big is appearing 3 times. Data is appearing 3 times. Hadoop is appearing 3 times. In is appearing 2 times. 3 times. Okay, and everybody is appearing 3 times. Let's just do learning about Hadoop only, so that big data appears only 2 times. Big data appears only 2 times, and I will match it. So big data appears 2 times, learning appears 3 times, Hadoop appears 3 times. So I have to count the number of words. What I will do is, first my mapper. What will my mapper accept? Mapper will accept this text. This text the mapper will accept in the private text word equal to new text. Or the mapper has some things I need to explain to you. So for that we will go to our Firefox. So I will type mapper. If we go to mapper, see, here it is. Yeah, here it is key in, value in, key out, value out. So this describes the input data key, input data value. Okay, what is the input data key and input data value? Okay, here this is describing the output data key and this is describing the output data value. Is that clear? In very simple terms, it's not much complex. So we are saying our input data key is long writable. Long writable, why? Because we are using an offset which could be like count of the number of characters in our text. Here it is small. Learning big data in Hadoop. Here it is small. I agree. No problem. Okay. But what if this line is very big? Like very big, extending your laptop, very big, like it covers long enough, 10-meter line. Okay, 10-meter line. Imagine this was a 10-meter line. Then in that case, would int be sufficient? Not 10-meter. It's too much, I said. Yeah, 10-meter. Then the offset for this line, that is the number of characters, would exceed integer. That's why we take long writable. Okay, long writable is an object, okay, that we are using for the key. Okay, similar to long, but it's a writable form. Next, we use text. What is a text? Text is like, once we set offset name like 0, here let's say I gave an offset of, this is the map phase. Once we give offset, like 26, here it is, let's say 36. Okay, okay, let's say it was, okay, no, oh god, no, CTRL doesn't work here. What the hell does work here now? Oh god, oh no, it's working. Finally, what should I do? Huh? Yeah, numlock must be off if you want to work here. So 27, 0, 27, 36. Okay, I am learning about big data in Hadoop. So these are the offsets. Now if this offset becomes very big, in case let's say for further lines are there like this big, can integer cover it? Tell me one thing, can integer cover it? And here it says something written Hadoop learning, let's change it to something, okay, it doesn't matter, I know. Can integer cover this? No. So that's why we use long writable. And what is text? Text is this after the offset. This is text. Okay, this is text. Key value pair for the input. This is text. Okay, next thing what we are going to do is, now this is the key in, key out,
sorry, key in, let me just go back to there. Key in, value in, key in, value in. This is the key. Why? I just set numlock to be off. This is the key in, this is the value in, key in, value in. Now this is the key out, this is the value out. What we want from here is, we want to extract from this data the string and the number of words on the right. Okay, the string and the number of the words on the right. What do I mean by that is, like, this is my input data. Now mapper converted my original raw data into this offset plus line key value pair data. Now MapReduce framework, what it will do, MapReduce framework will convert this data into something like this: learning comma learning 3, you can say learning 3 big data 2, like the string, or you can say text and the number of words Hadoop. So it's how many times each word appears. In appears 2 times, so that also we cover. I appears 1 time, am appears 1 time, about appears 1 time. This kind of output we MapReduce framework will convert this output, this input, input which was generated by mapper from the raw data, okay, to this output that will be like generated by the MapReduce framework. MapReduce framework will generate this output from this input by map. See, what is it? First, it was raw data without any offset. I will explain once again. First, it was raw data without any offset. Mapper gave an offset of 0, 27, 36 and a very big number. Okay. Then, which we store using long array table. Then MapReduce function, MapReduce framework, what it does, MapReduce framework converted this into this kind of data: key value pair out, key out, value out. I will show you once again. If I go to my Hadoop definitive guide, it is strictly written that the output from the MapReduce map. No, Mapper only does this. Mapper only does this. Yeah, this all thing is done by Mapper. I'm sorry. Yeah, just little change. This offset thing is also done by the mapper, plus extraction of the correct key value pair. Offset one is key value pair is okay, but extraction of the correct output key value pair is also done by the mapper. So the mapper has done 2 jobs. Let me repeat myself and make myself correct. Okay, I will make myself correct. What I say, firstly the data was without offset. ठीक है, कुछ नहीं था इधर, nothing was here, it was just plain raw data. Mapper, what it did, mapper gave this data offsets and make it key value pairs, input key value pairs, so that it can be processed further. And then it processed it further and produced output key value pairs, mapper only, output key value pairs. Okay, so learning 3, big data 2, Hadoop 3, N2, I1, this is produced by mapper only. Okay, this is what text int table. As you can see, text int table. Okay, now here something has been done. Oh god. Fuck. Oh god, I think I did something wrong. Stay with me, Kyle, stay with me. I will just correct myself. Till here, why? According to this program, what we are doing, till here I was correct, giving the offsets and I think mapper, what it will do now? Instead of this, it will convert something into like this.
learning one, copy paste. No, yaar. Can you just simply copy paste? No. Oh God, we have to write again and again. The number of times word appears. Number of times word appears. It is logic like this: learning one, then again learning one. We are for every word mapper is doing for every word. And for this logic, the mapper is assigning, because mapper cannot do mathematical tasks. I did something wrong here. I counted the number of before words beforehand only. But what the mapper does is, it will just assign key value output pairs according to something, according to some column. Okay. So here we defined one as an iteratable. One as an iteratable. No, no, no. Close. Women Gaming Hub. No, not now. Not now. Okay. Why new block? I don't want. So this one in new entire table is given as the output key. Okay, I will just, oh God, no, no, no. Yeah, yeah. Let me just move it side. Yeah, here it will be more visible. Okay, so this new entire table, it was the output key value, output value out. Okay, key out, value out. So this new entire table one is the value out, which the mapper will produce, because mapper cannot do mathematical tasks like counting, summing, averaging. These mapper things cannot do. That will reduce function will do. Okay, so here it will big data one. Just a little bit of correction, guys. Big data one, and here it will do big data one. Two times big data is appearing, so this many times only. In will be also like in one, in one, and it will be like I one am one. We'll go to the map reduce and reduce function just in a minute only. I am, and last was what? About one. We will not take every word like JKDFS, JKFDA. These words are random. I will not take it for now because they won't make much sense. Okay. So the mapper does this job, giving offset values for key in and value in pairs. Then using that key in and value in pairs, it produced what? Key out and value out pairs from the columns. Okay, whatever columns were taken for consideration, whatever criteria, like here number of times the word is appearing, it gave it one as the entry table. Okay, but what algorithm we used here? We use string tokenizer. String tokenizer, what does it do, brother? Like if you have a string, very big string, it will split it using spaces, and then it will convert it into a format like learning Hadoop for big data. Okay, like if the words are these, so each word is treated as a token. Each word is treated as a token. That is it correct? Now, for each token, we will set the word learning. We will set the word like we will make an kind of word learning Hadoop for big data. Now, this thing, now context we will use to write word comma one. So what will it do? It will convert this into word comma one. One is what? One. So for each word, so it will pick learning Hadoop, and for big data, every time it appears, it will what it will do? What it will do? It will assign it like this: learning one, big data one, in one, I one, am about one. Now next we come to word count reducer. Now this thing is very important. Very important. Why? Listen very carefully. See, this uses map reduce framework.
Let me just copy it. Where are we now? We were here. Okay, we were here. I'm copying it for better visualization. Still here. Nice. Word count reducer. Okay. Below this, I will write the comment and I will just close it using this. Okay, now it's a multi-line comment and I will just close it. Okay, now it's great. Now it's great. See, yeah. So after the mapper task, we are left with this data. Now this is in our context. This is in our context. Now context will be used where? Context will be used where? Context will be used here in the reduce function. Here context. Okay. Now here let's see the reduce function online. Let's see the reduce function. Necessary. It's necessary. Reduce. Reduce. Okay. Apache link is not coming. Reduce Apache. Map reduce tutorial. I think this only. Yeah, map reduce tutorial. Yeah, reducer we want. We want reducer. Okay. Reducer. If we look at the program now, where is it? No. Reducer I want. No. Reducer, reduce function, Apache. Let me just go through some things. Mapper. No. Okay, mapper is here. Okay, mapper is here. Class mapper is here. Map reduce. Yeah, here only we are. No. I will just change this. Then we will get. Yeah, reducer. We got reducer. Just changing the URL, we got the reducer. Yeah, still there, bro. Yeah, nice. Yeah. Next. Reducer, what it has? Same key in, key value in, key out, value out. Let's see the code first. So code is like this. Okay, extends reducer, and it has a context which we sent here. Okay, key in, key whatever what it was. I will let's show you. See, what was our format? Text and int writable. So this is text, and this is int writable. So our text is going here, int writable is going here. Everything clear now? Key in, value in, and key in, value in, and key out, value out. So here key out and value out are still text and int writable. What format? I will show you now. Sure. Yeah, just wait a minute. Yeah, what it will do. This will now give learning the final output how it will be done. See here, look very carefully. There are two stages. First, the map reduce converts above key in value in to text and iterable. Okay, key in was text, value was value in was int iterable. Is that correct? Int iterable. Sorry, int writable. Int writable.
I am wrong. I am so wrong. Please forgive me for such a mistake. ठीक है? So int iterable was the key value in. Okay, to text and iterable. This is not the key out and value. This is just a process. This is just a process. What it will be like? Come to here. I will show you everything. Those who are watching my stream, they will understand. I will make sure that you understand each and every bit to the very depth, not leaving a thing for you guys. Okay, like you can see, very similar thing we are doing now. Kind of similar thing, like MapReduce did this. MapReduce did this now before sending it to the reduce function. Similar thing MapReduce will do before sending it. Before sending this. Before sending this to the reduce function, before even this reduce function, what will MapReducer do? What will MapReducer do? MapReducer framework. Just keep it in mind. MapReduce framework is different. MapReduce function is different. The task that is happening in between was performed by MapReduce. Okay, and the task after that is performed by the MapReduce function. So MapReduce framework. MapReduce framework. Sorry, it is map and framework converts above key in text to what? Yeah, here. So it would be what it would be here? Learning 1, 1, 1. Is that correct? Big data 1, 1. Correct. Next it is in text and iterable. Just what I told you. Text and iterable. Very simple. As you can see, values it is taking. Okay. Yeah. See, reducer is taking this thing. Map. Okay. And reduce is taking values and context. Okay. We will understand. You will understand everything. Just take it slow. Take it slow. Take it slow. I'm not even a professional at this, but I'm doing like whatever I understand best. I'm giving it to you. Okay. At least in theory, code also I'm giving, but just wait. Don't look at the above headings sometimes in code like these headings, because these are different. Here it is different, but you know context is going inside here. You knew context is going inside here. But what kind of context? This kind of context will go, not this. This will not. After MapReduce framework does its job and converts into this will am1 and about 1. Okay, this is what MapReduce framework did. Fine. And then it sent it this to this context. No context. It didn't send to the context. Sorry, it sent it into values. This was sent to the context. Is just used for creating a context. Okay, context is just used for creating the context. It's a little bit confusion from my side. This has only the use to like creating an object of the context class, and that object is used to create a new context which will be displayed or used. Okay, simple. So this thing after MapReduce framework is done with creating this thing will be passed to values, iterable, iterable values. Okay, key and values. So see how they will pass. This learning and big data in am about will be passed to text. Now understand, guys. Now understand. See what happened. First, we extended the reducer class. This reducer class used MapReduce. You can see MapReduce. You see very carefully, guys. I'm just pointing my cursor at it. Used the MapReduce framework to convert this text and int table to
this format. And what is this format? When you see it here, after it has been converted, it is passed here. Learning is passed here as the key. Iterable is passed here as the values. Okay, and our final output is still not decided here. Final output will decide. This is our final output, key and the one value, which is the number of words. This will be decided after this function completes. After this function completes, reduce function. Okay, now let's go through it. So we take a sum equal to 0. We take a sum equal to 0. See, wow, how much beautiful it is. First reducer, if I just, yeah, first map reduce converts this text and int table into text and iterable, Now this text and iterable converted from this is used inside this reduce function to produce the final output text and iterable. So complex but still so interesting. You can just say, so now int sum is equal to 0. Okay, simple basic programming. Iterator int table val is equal to values dot iterator to iterate over these values. Okay, to iterate over these values. Is somebody still in the stream? Yeah, still in the stream. Nice. Okay, now values are here. Values dot iterator. While value has not next. While there is a value to be go through. Like I went through one, and then I went through one, then I went through one. What it will do? It will do the sum val dot next dot get. Why is dot get used? See, dot get is used because val has a as you can see, where is val? Yeah, val has a type of intratable. Val has a type of intratable, but we want sum is the type of integer. So to convert integer to intratable, intratable to integer, we use get. Okay, simple. Val dot next dot get. Now we use the context class, context object, the small context object of the big capital context class, Okay, now this object is used to write a new context key and new iterable sum. This sum integer is again converted back to iterable because is being, yeah, I thought the stream just suddenly ended by some error. This is being, I will just go down, this is being passed to this key out and value out. Okay, this is being passed to here. Now one thing I say, there are some things I say which can be correct or incorrect. Whatever I say is mostly correct, but please refer the books also. But I am referring the book and just telling you. Okay, whoever is watching, just whatever I teach in video, again refer the books. And if you find something where I was a little bit wrong, just teach yourself. It won't take much, 1 minute or 2 minutes or so. Okay, so now here reduce function converts text comma iterable to text comma int writable till here. Okay, and now what it is being converted to? Learning comma 1 plus 1 plus 1, what it is? 3. Final output. Big data. One thing, guys, just it would be big data because without no, it's like if I give no spaces, because without spaces, why? Just listen to me once. Big data, here it would be into, okay, because if you give spaces now, that means more words. I just did a minor mistake here. Like big data doesn't have space between them. It is a single word. Na? Am is appearing one time.
about is appearing one time. Okay, this is what is the code is doing. This final thing is now passed to here. Now this final thing is not passed. I think this final thing was supposed to be returned. That's why we return here in the as a parameter, as a some kind of parameter. Text entry table would be returned, key out and value out would be returned. So it is returned where? It is returned here, is creating a new context. Okay, understood this much. Now come to the main program. What is the main program do? I also still don't know. Like this program will now find some way to print whatever we have implemented using public static void main, using a run implements tool and thing. I will study it tomorrow and I will tell you. For now, let's go back to the book. Let's go back to the book and let's take a small break first. Okay, let's take a small break. I think so. I'm taking a small break.
गाइस आई एम जो भी अभी एक व्यूअर देख रहा है, कोई जो भी काइल देख रहा होगा, कोई भी देख रहा होगा, काइल ही देख रहा है। काइल, if you are watching, I'm sorry bro, like it's night too, and if I sleep at 3 not 10 tomorrow, it will be very difficult for me to focus, so I should sleep now. Okay, and you can also sleep, so I'm ending the stream right now. So guys, मैं stream बंद कर रहा हूँ अभी, ठीक है, bye.